सुनीता बहन बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में आने के लिए और लाइव सेशन को लाइक करने के लिए। थैंक यू मेरी प्यारी बहना। दिल से धन्यवाद लाइव में आने के लिए और लाइव सेशन को लाइक करने के लिए, हृदय से आभार। क्या पूरा देखा? क्या पूरा क्या देखा सुनीता बहन? सुनीता बहन पूरा क्या देखा? वो जो आज वीडियो डाली हूँ वॉच कर लिया करो। मैं भी आपका मैं तो मेरी एक आदत, जब मैं जिसके चैनल पर जाती हूँ लगातार 4-5 वीडियो देखती हूँ। रोज जा नहीं पाती हूँ, जब जाती हूँ तो 4-5 लगातार देखती हूँ। अच्छा अच्छा, गलती से कुछ भी लिख जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि वो वीडियो का अभी वीडियो डाली थी ना, मैं सोची वीडियो का नोटिफिकेशन गया था तो उसको पूरा देखी थी। इधर मैं कई वीडियो आपकी देखी थी, नाच वाले इधर 5-6 ठो तो नाच वाले जो जो डाली हूँ ना, वो मतलब ग्रुप में जो प्रोग्राम वाला नाच है, 4-5 वीडियो सारा नाच देखी हूँ। और एक सोहर जो का भले की हो सासू तू भले की हो सेठौरा चोराई लिहू हो, ये वाला सोहर गीत सुनी हूँ। आजू मोरे लाल भैं सगलो अंजोर भैं नैहरे तकसोर भैं, ये वाला सोहर गीत सुनी हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑन करके रख दो, मैं भी खाना बना लूँ, भी खाना नहीं बनाई हूँ। आलू आलू ऐसा बड़ा 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 पतला लगता है। 1000 कमाना कुछ ना, आलू क्या टमाटर 1000 तो भाई काम कर उन लोगों का बढ़िया पूछा। तो भैया मैं पढ़ा लिखा जा टमाटर मैं घर से इतने कमाई होती है टमाटर बाजार के लाया नहीं, कल इतना सारे लाया है सारा है, थोड़ा बहुत सारा चूड़ा ले ले सारा का है एक अदरक खाली झंडू चमन 10 रुपया किलो मालूम है और ले लेना 10 भैया से हटावा किसमें ले लेंगे ये प्याज खत्म हो गया कि है? हाँ
1 किलो प्याज ले ली 26 रुपया में। हो जाएगी हो जाएगी। तो फिर का गांव में रहो तो का बैठी रहो। उसने तो अभी गांव में लगाओ। हां तो आटा सान ले ले तो पहले अपन आटा सान ले तो रात ही रही में उतना करा हो जाएगी। ना तो हाथ में भट गई तो फिर ना लगी। बता करे कि आटा सान लो आओ तो फिर बनावे लागी। लाइट मेरे माइक खुला है।
थैंक यू भैया जी, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आवाज बंद कर रखी थी भैया, इसी वजह से आवाज नहीं जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया लाइव में आने के लिए और लाइक डन करने के लिए। थैंक यू भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनीता बहन, अगर मेरी आवाज जा रही हो तो आपका क्लिकर हट गया है। कमेंट नहीं आ रहा है सुनीता। कमेंट से क्लिकर हटा के इसे ऑन करके रख दो। अगर मेरी आवाज जा रही हो तो क्लिकर हटा के ऑन करके रख दो। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ऑन ही रख देना। दोनों ऑन है कि एक? हाँ ठीक है, क्लिकर ना लगाना, क्लिकर से ऐड नहीं आ पाता, जब ऐड आता तो दिक्कत करने लगता है क्लिकर। ऐसे ऑन करके रख देना। थोड़ी देर में बाहर निकल के ऐसे फिर अंदर कर दो तो जल्दी जल्दी ऐड आ जाता है। जैसे फ्री होना तो बाहर, मतलब लाइव से बाहर जाके फिर से चला दो तो फिर ऐड आने लगता है। जल्दी जल्दी ऐड आ जाता है इसी में। अच्छा, एक ऑन है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। डब्बा दे दो डब्बा दे दो हमारे शुरू देगा कौन खाती है वो कहते पहले पानी डब्बा मांगे। डब्बा नहीं बोतल कह रहा है ओ देगा खाना ना कम में खाता है। तथी रास्ता में पीला हो गया खाता। तथिया दे काई तस्ती तो ना वाला के वाला के लिया है। तस्ती तो पढ़ नहीं आ जाना, तस्ती का होता है। पापा से सुना है लेट्स लिखा जाता है में आप का आधा लीटर है काबू यारी। तुझे लाया निकाल आया नहीं। जितनी आज वो पकाता है उतनी देर से ओके हो जैसे अरे तो अबे गलते नहीं कि गरमाने नहीं कि पागल है सब तो अब दल्लू धो के कभी पानी डालत है ना उनका हम नहीं करेंगे नहीं हो अब का ड्राइव ले लेते हैं वगैरह हमारे दादू कम मिला था हम लोग ले लेते हमारे कम मिला तो ड्राइव ले लेते लड़ बजे हाथ तीन करा एमा भैया ये का हो रखेगा है। ये का पे गिलास का है। हैं गिलास रखा है चलो तो ये हो गया। फिर बंद हो गया क्या लाइव तो हर लाइव चलते हैं दूसरे लाइव चलते हैं
$13 है सुनीता सिस्टर, मेरा $13 हुआ है। मम्मी 14 होने वाला है। दूध नहीं रहेगा, दूध नहीं। अरे धीमी आंच कर रखी हूँ, अरे सुना तो आ रही हूँ। सुनीता बहन, मेरा $13 हो गया है, 14 होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम गायत्री दीदी जी।
धन्यवाद लाइव में आने के लिए और लाइव सेशन को लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद दीदी जी। दीदी जी लाइक डन कर दीजिए। गायत्री दीदी लाइक डन कर दीजिए अगर लाइव में हो तो आप। थैंक यू दीदी जी लाइक डन करने के लिए। अच्छा अच्छा दीदी जी सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, मोस्ट वेलकम लाइव में आने के लिए और लाइव सेशन को लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद दीदी जी। ठीक हूँ दीदी जी, आप कैसी हो? हाँ दीदी आऊंगी, आज जो है काम के चक्कर में भूल गई थी। कल आई थी, कल भी नहीं आई थी। कल क्रिसमस था, लड़का घर में था, उसका पेपर हो रहा है तो बीच बीच में गैप हो जाता है, तो घर में रहता है तो फिर मोबाइल उठाती नहीं, इसी वजह से। हाँ गायत्री दीदी लाइक मिल गया है आपका। आऊंगी दीदी आऊंगी। और सब बढ़िया है दीदी जी। राम राम दीदी जी, राम राम। हाँ दीदी जी सब बढ़िया है, सब माता रानी की कृपा है, आप सब बड़ों का आशीर्वाद है। दीदी पूरी रात ऑन करके रखूंगी। अमेरिका वाली दीदी जी आपसे बोल रही हूँ, पूरी रात ऑन करके रखूंगी।
हाँ ठीक है दीदी, आप अभी जिसका सपोर्ट करना हो कर दो। मैं पूरी रात ऑन रखूंगी दीदी। ठीक है दीदी जी, ठीक है। थैंक यू दीदी जी ऐड वॉच करने के लिए। बाय बाय नहीं कर। हाँ ठीक है दीदी, बाय बाय नहीं करना। ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है सुनीता बहन, ठीक है।
ठीक है, आन रहो बहन, आन रहो।
बहुत बहुत धन्यवाद गंगोत्री बहन। ये अपना मोबाइल बंद करो नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। थैंक यू गंगोत्री बहन। मैं अपना मोबाइल म्यूट कर रखी हूँ, बगल में मोबाइल चल रहा है, इसी वजह से कॉपीराइट ना लगे। मैं म्यूट कर रखी हूँ गंगोत्री बहन अपना मोबाइल।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमन सिस्टर लाइव में आने के लिए और लाइव लो, सेशन को तुम लाइक लोग करने के लिए दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी तो बहन। बाजा। बाय बाय गायत्री दीदी, गायत्री दीदी बाय बाय। ठीक है दीदी जी, ठीक है। ठीक है दीदी जी। ठीक है दीदी, ठीक है। बाय बाय दीदी जी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि दीदी जी। सुमन सुमन दीदी आप जो है वो कमेंट की थी कि ये वाला पूरा डाल दो। आप देखना, एक हरी हरी साड़ी में माइक में गाई हूँ, वो वाला गाना मैं पूरा कल ही, मतलब पहले कल ही डाल दी थी। दोनों एक साथ ही डाली थी, शॉर्ट भी डाली थी, फुल भी डाली थी। गवन वाला गीत जो था। थैंक यू दीदी जी। बहुत गवन तो मैं, आप नीचे गई ना, बहुत विवाह हो गए तो गवन गीत बहुत डाली हूँ। पिछले साल नवंबर दिसंबर में, एक साल नीचे आप जाइए, तो पिछले साल नवंबर दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी, मतलब पूरा जब तक शादी विवाह का समय चल रहा था, बहुत विवाह गीत डाली हूँ। आपको सीखिए, जो विवाह गीत डाली हूँ यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, यूट्यूब पर नहीं है। कुछ मिलते हैं यूट्यूब में, कुछ नहीं मिलते। थैंक यू गंगोत्री सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगोत्री सिस्टर, खाना पीना हो गया आपका?
थैंक यू गंगोत्री सिस्टर। गंगोत्री सिस्टर, खाना बन गया कि नहीं आपका? बेटा हम्म, तो कुछ क्या बताई बहन, हम आपकी लाइव में ही सुन लेंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए।
थैंक यू दीदी जी गाना सुनने के। हाँ हाँ, ये गवन गीत है पहले। अब तो गवन होता ही नहीं है, पहले शादी होती थी फिर गवना होता था। अब तो शादी में विदाई हो जाती है तो गवन गाने का कोई चांस ही नहीं है। न, ढेर सारे गवन गीत, गवन और विवाह गीत पिछले साल बहुत डाली हूँ। आपकी तो पता नहीं क्या हो गया है, गले में गा ही नहीं पाती हूँ, सांस फूलती रहती है। हाँ, सब अच्छे अच्छे विवाह गीत डाली हूँ। आप जाइए कभी चैनल पर जाइए, सुनेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे हूँ, सच में बहुत अच्छे अच्छे विवाह गीत हैं। और मैं वही गाना डालती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे जो एक भाई वाला जो शॉर्ट डाली हूँ ना, ये भी पूरा नहीं डाली हूँ। है ऐसे है ये, जो ने बने। आप अगर लाइव में हो तो सुनाएं। यार ये अपनी आवाज बंद करो, करो नहीं तो दिक्कत होगी, कॉपीराइट लग जाएगा। हाँ, सुना रही हूँ आपको। ये जो भैया वाला डाली हूँ ना, कल आप सुन रही थी। सुना रही हूँ आपको। जौने बने सिकिया ना डोलाई, मेरे गे नाही बोला, वही बाने भी है बाबा। अरे नहीं बन रही राग। जौने बन सिक, अब राग गड़बड़ा रही है। जौने बन सिकिया ना डोले, मेरे गे नाही बोला। बाय बाय गंगोत्री सिस्टर, बाय बाय। बाय बाय गंगोत्री सिस्टर। अबे वही बाने भी हैं बाबा मोरे, उलटी नाही चिते माई हो। अभी फलाहार करके, आज व्रत था एकादशी, तो फलाहार करके आई हूँ, इसी वजह से और नहीं गा पा रही हूँ, तुरंत खा के बैठी हूँ। मचिए बैठी हाई सासू, तो बहु आया रजे करई हो सासू, कौनी बरने मोरी माया, तो कौने बापया। अच्छा अच्छा, ऑफलाइन नहीं है। इटिया बरने तोहरी माया, तो पथेरा बापया हई हो बहुआ लो बाबा, रने बीरन भैया, उलटी नाही चिते माई हो। जब ऐसे मतलब सास से मतलब माँ बाप सब शादी के कि उनका कहो गब्बे नहीं भैं ससुराल, तो अपने सास से पूछत यहाँ कि कौने बरन हमरे महतारी यहाँ, कैसे बाप यहाँ, कैसे हमरे भाई यहाँ। तो सास उनके कहा थे कि इटिया बरने तोहरी माया, तो पथेरा बापया हई हो बहुआ लोवा, बरने बीरन भैया, उलटी नाही चिते माई हो। तब बहुरिया अपने सास से कहा थी, गंगा बरने मोरी माया,
माया तो यमुना बापया हई हो सासु सरेयुबा रने बीरन भैया उलटी नाही चिते माई हो। फिर उसके बाद अपने मैके एक बारे चल दे थी। अरे अरे नागरे के कहारा बेगा है चलाया वाऊ कहाँ रहा ले बेले डरिया सजावा नहीं हरे पहुँचावाऊ हो। एक बने गई है दूसरे बाने तीसरे बापया बाने हो भैया की मोरी माया जी मरी गाई बपाई बिसरी गाई हो। भैया की तू भौजी के मते माऊ लटी नाही चितया है। सुमन दीदी सुन रही है ना? सुमन दीदी सुन रही है कि नहीं? अगर सुन रही हो तो सुनाए, नहीं तो फिर ना सुनाए, कमेंट करके बताओ। सुमन दीदी अगर आप सुन रही हो तभी सुनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं फलाहार करके उठी हूँ ना, तो ये वाला गाना गाने में बहुत ताकत लगती है। खाना खाने के बाद नहीं गा पाती हूँ। अब आपका कमेंट आएगा तभी गाऊंगी आगे। नहीं कोई सुन भी ना रहा हो, मैं फालतू परेशान हो रही हूँ। कि मोरी माया जी मरी गाई बापा बिसरी गाई हो भैया की तू भौजी के मते माऊ लटी नाही चितया हई हो। ना तोहरी माया जी मरी गाई बपाई बिसरी गाई हो बहिनी ना में भौजी के मते माऊ लटी नाही चिताए है। जला देते हो। हाँ अभी गा पता नहीं क्या हो गया है आजकल, गा ही जैसे सांस में दिक्कत हो रही हो, ठंडी से है कि क्या है, गले से लेके चेस्ट तक जब गाना गाती हूँ तो बहुत पता नहीं कैसे भारी भारी लगता है। इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, रोज 2-2 3-3 दिन गैप हो जाता है। लेकिन सुना दे रही हूँ ये वाला पूरा। ना माया तो तोरी बूढ़ाई गाई बपाई जा पले होई गे हो बहिनी हमारी तो बुद्धि लारे कैया उलटी नाही चिता ये है हो बहिनी हमारी तो बुद्धि लारे कहीं यहाँ उलटी नाही चिता ये है हो। ये सोहर सोहर हुआ, विवाह हुआ, सब गाने में बहुत मेहनत लगती है। 2-3 लोग रहे तब तो आसान रहे। सोहर में भी इतनी मेहनत लगती है, विवाह में भी, गवन में भी। और भजन वजन तो आसानी से गाया जा सकता है, अकेले भी गाने में कोई दिक्कत नहीं होती भजन। ओके ठीक है।
बहुत मेहनत पड़ती है ना, बहुत तेज उठाना पड़ता है। ये वाला गाना बिना उठाए मतलब गाने में कहाँ अच्छा लगता है। एक विवाह गीत डाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी चाची बताई थी। चाची मेरे बहुत मुझे विवाह गीत बताई हैं। अच्छा अच्छा, कल भी आप आई थी? नहीं, कल तो मैं चलाई ही नहीं थी। दूसरा एक मोबाइल चलाई थी, ये वाला नहीं चलाई थी। परसों आई होंगी। परसों चलाई थी, कल नहीं चलाई थी ये वाला मोबाइल। इसमें लाइव कल परसों चलाई थी। एक और सुना रही हूँ आपको, विवाह गीत बहुत अच्छा है। मुझे जैसे सांस में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आता क्या दिक्कत हो रही है। है ना, आप लाइव में है ना दीदी? सुनिए, मैं आपको एक सुना रही हूँ विवाह गीत। बचपन से मोरे बाबा सुगे ना जो पालाई, पाली के कराई सयाने जी। बचपन से मोरे बाबा सुगे ना जो पालाई, पाली के कराई सयानाई। बिलरिया झपटी लई गए सुगेना, बाबा गाए हैं खिसियाई। आई बिलरिया झपटी लई गए सुगेना, बाबा गाए हैं खिसियाई हो। बचपन से मोरी माया बेटा जो पाला, पाली के कराई सयान। आई पातो ही आया लग होई गे बेटा, रही गाई माया अकेले। आई पातो ही आया लग होई गे बेटेवा, रही गाई माया अकेल। बचपन से मोरी माया बेटी जो पालाई, पाली के कराई सयाने हो। आए दूल्हे रामा मड़ाए माँ बैठे, लई गाए बेटी बियाही हो। आए तू आए दूल्हे रामा मड़ाए माँ बैठे, लई गाए बेटी बियाही हो। बचपन से मोरे बाबा रुपिया कमाने, कमाई लगाए हैं ढेरे हो। आए समधीरा मादई जा पर अरे जे, लई गाए रुपिया बटोरे हो। कैसे लगा दीदी आपको ये वाला? दीदी ये वाला आपको कैसे लगा गाना?
हाँ दीदी, हमको ये वाला बहुत अच्छा लगता है। डाली हूँ, इसको भी डाली हूँ। बहुत अच्छे अच्छे विवाह गीत डाली हूँ। माता जी के भी, नवरात्रि में माता जी के भी भजन बहुत बढ़िया बढ़िया डाली हूँ। जितने देवी गीत जो डालती हूँ ना, ना अंधा लूला लंगड़ा वाला डालती हूँ, और ना ये जो बिंदी टीका ये वाला है, ना इसे ही डालती हूँ। इससे दोनों से भी हटके। माता जी के भजन, देवी गीत बहुत बढ़िया बढ़िया देवी गीत भी डाली हूँ। रुको, अच्छा अभी रुको, अभी आपको एक देवी गीत भी सुनाती हूँ। हृदय में बस गए मेरे प्रभु राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। हृदय में बस गए मेरे श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। दीदी, आपको एक देवी गीत सुना रही हूँ। दीदी कमेंट करिए, आप सुन रही हैं कि नहीं। हाँ ना कर दे तो उसके बाद फिर सुनाऊं। दीदी अगर लाइव में हो तो कमेंट कर दो कि हाँ सुन रही हूँ। अगर सुन रही हो आप तो फिर देवी गीत सुनाऊं आपको एक। कितना सुंदर लगे मेरी माँ का भावन, स्वर्ग में भी तो ऐसा नजारा नहीं। कितना सुंदर लगे मेरी माँ का भावन, स्वर्ग में भी तो। हमको लगा था हम जो सारा दिन ही एक कमरा में पड़ी रही थी, यही वजह से कई बीमारी होती है। योगा एक्सरसाइज करी, कुछ टहली वहली तो आराम मिले। माँ कर ले दो बातें भक्तों से, हम तरस रहे हैं बरसों से। माँ कर ले दो बातें। अच्छा हाँ, कमेंट तो आ गया दीदी का, सुना रही हूँ दीदी। हे मात जगत जननी, हे मात जगत जननी, मेरे दो सवाल अमर करे दो। हे मात
आज व्रत है, नमक नहीं खाए, उनको लगता है इस वजह से है। खींच के नहीं आ रहे हैं दीदी, इसे धीरे धीरे गा के सुना दे रही हूँ आपको। बस खाली गाना के बोल सुनना, बस एक शब्द पे ध्यान देना। एक एक शब्द बहुत अच्छे हैं। माता जी का भजन है, ऐसे ऐसे ही माता जी के भजन में डाली हूँ। वो रंगना बिंदी सिंदूर वाला भी नहीं डालती और अंधा लूला लंगड़ा वाला भी नहीं डालती। अच्छा ठीक है सुना रही हूँ दीदी। हे माते जगत। दीदी मैं अपने लड़के को पढ़ाने के लिए किराए के मकान में रहती हूँ, ऊपर नीचे सब किराएदार रहते हैं यहाँ, इसी वजह से धीरे धीरे गा के सुना रही हूँ, रात का समय है ना। हे माते जगत जननी, हे माते जगत जननी, मेरे दो सवाल अमर कर दो, मेरा लाल अमर कर दो, माँ सुहागे अमर कर दो, मेरा लाल अमर कर दो, माँ सुहागे अमर कर दो। एक मांगे का मोती है, एक आँखें की ज्योति है, एक मांगे का मोती है, एक आँखें की ज्योति है, उसे आँखें की ज्योति का, उसे आँखें की ज्योति का मानूर अमर कर दो, उसे आँखें की ज्योति का, उसे आँखें की ज्योति का मानूर अमर कर दो, मेरा लाल अमर कर दो, माँ सुहागे अमर कर दो। हाँ पता नहीं, हमको लगता है नमक नहीं खाए, इस वजह से खींच नहीं पा रही हूँ, गा नहीं पा रही हूँ। नहीं दीदी, इधर पता नहीं क्या हुआ, इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, गाना नहीं गा पा रही हूँ, और गाना खींच के गाने की आदत है, लेकिन सुना दे रही हूँ धीरे धीरे करके। सांस बहुत फूल रही है। सांस फूलने की बीमारी मेरी नानी को भी, मेरी मम्मी को भी थी, और मेरी 42 साल उम्र हो गई है, मुझे भी पकड़ रही है, जैसे लग रहा है सांस वाली बीमारी। पिछले साल ठंडी से ही शुरू हुई है, गाना गाने में दिक्कत हो रही है। एक कुल की शोभा है, एक कुल आदि, एक कुल की शोभा है, एक कुल का दीपक है, एक कुल का, एक कुल का दीपक है, एक कुल का दीपक है, एक कुल की शोभा है, उस कुल के दीपक का, उस कुल के दीपक का ना ज्योति अमर कर दो, उस कुल के दीपक का, उस कुल के दीपक का माँ ज्योति अमर कर दो, मेरा लाल अमर कर दो, मेरा लाल अमर कर दो, माँ सुहाग अमर कर दो, एक बाग का माली है, एक बाग का माली है, एक फूल की डाली है, एक बाग का माली है, एक फूल की डाली है,
उसे फूल की डाली का, उसे फूल की डाली का, माँ फूल अमर कर दो, मेरा लाल अमर कर दो, माँ सुहागे अमर कर दो। एक मेरा सहारा है, एक मेरा सहारा है, एक मेरे सहारे है, एक मेरा सहारा है, एक मेरे सहारे है। मैं फूल भी लाई हूँ, मैं फूल भी लाई हूँ, माँ हार भी लाई हूँ, श्रद्धा और भक्ति से, श्रद्धा और भक्ति से माँ शीस झुकाई हूँ, चरणों में जगह देना, चरणों में जगह देना, परिवार अमर कर दो, मेरा लाल अमर कर दो, माँ सुहागे अमर कर दो। जय माता रानी की। कैसे लगा दीदी ये वाला माता रानी के भजन? चलो ठीक है दीदी, ठीक है। कल भी यही समस्या रहेगी दीदी, इधर जब से पता नहीं ठंडी की वजह से या क्या दिक्कत हो गई है, इसी वजह से वीडियो 3-3 4-4 दिन, जबकि कल मोनेटाइज हो गया, वीडियो रोज डालना चाहिए, लेकिन ये ना गा पाने की वजह से, जैसे परसों बहुत ठंडा हो गया था मौसम, तो गले में जैसे खुजली होती है और खांसी जैसे आने लगती है। बीच में तो नवरात्रि के बाद शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी, और अंदर से एकदम मोटी मोटी आवाज लगती है गाना गाने में। पिछले साल ठीक थी, फिर भी आवाज, अब की ही ज्यादा ठंड में दिक्कत हो रही है। ये सब माता रानी के भजन सुनने के लिए आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा। पिछले साल शुरू में वही, पिछले साल अगस्त सितंबर अक्टूबर में पड़ती है ना नवरात्रि, पिछले साल वाली नवरात्रि में डाली हूँ खूब। सब ऐसे ही डाली हूँ, जितने डाली हूँ सब बढ़िया बढ़िया। जैसे एक डाली हूँ, मैया मैं तेरी बेटी हूँ, ऐसे पढ़ के सुना दे रही हूँ, मैया मैं तेरी बेटी हूँ, रखियो मेरी लाज, धन दौलत देना मत देना, देना अमर सुहाग, मेरा धन दौलत मेरा साजन, मेरा स्वर्गपति आंगन, बना रहे बस साजन मेरा, देना आशीर्वाद, मैया मैं तेरी, मेहंदी चूड़ी में रंग भर दे, बिंदिया झुमका नथनी कर चमके, मेरी जब तक सांस चले मां रहे तुम्हारा साथ, मैया मैं तेरी बेटी हूँ। में रंग भर दे, मेहंदी चूड़ी में रंग भर दे, दे बिंदिया झुमका नथनी चमके, मेरी जब तक सांस चले माँ
मेरा निभाना साथ मैया, मैं तेरी बेटी हूँ। रखना अमर सुहाग मैया, मैं तेरी बेटी हूँ। रखना अमर सुहाग। तेरे पर ही जोर है मेरा, तेरे सिवा नहीं और है मेरा, तेरे सिवा कोई और न मेरा। ते तो बस माँ से बोले अपने दिल की बात मैया, मैं तेरी बेटी हूँ। मैया मैं तेरी बेटी हूँ। रखे में
बाय बाय दीदी जी, बाय बाय, जरूर आऊंगी दीदी, जरूर आऊंगी।